So good luck. And top heifers, they don't come cheap. तो टॉप ब्रीड मेरा भी उन फार्मर्स के लिए भी मशवरा है कि अगर आपने ब्रीडिंग करनी है तो बजाय ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा नंबर्स की तरफ जाएं, क्वालिटी ले लें, कम ले लें, पर आपका जो गोल है वो ऊपर से ही शुरू होना चाहिए। बेसिकली मैंने इनसे ये पूछा कि ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण जो दुनिया में ब्राह्मण है उससे समवट डिफरेंट है, तो उन्होंने कहा हाँ डिफरेंट है, जो भी करना होता है मुझे वो टॉप से ही करना होता है, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं बॉटम को ब्रीड करके। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, आज मैं तकरीबन 4 घंटे मुझे लग गए यहाँ पहुँचते पहुँचते, 2 घंटे की फ़्लाइट ब्रिस्बेन से और फिर 2-2.5 घंटे की ड्राइव यहाँ, तो तकरीबन 2000 किलोमीटर है विक्टोरिया से ये क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया के कह लेते हैं आर्गुबली ग्रे ब्राह्मण के बेस्ट फार्मर, तकरीबन 4 से 5000 ग्रे ब्राह्मण ये करते हैं, बिगेस्ट भी हैं और बेस्ट भी हैं। मैंने दुनिया का नहीं कहा बिकॉज़ पूरी दुनिया में डिफरेंट प्रैक्टिस हो रही हैं, बट आर्गुबली जो मैंने यहाँ पे देखा है ब्राह्मण का इज़ माइंड ब्लोइंग। हमने HRM पे ऑफ कोर्स पहले डेयरी स्टार्ट किया, फिर उसमें भी हम डाइवर्सिफिकेशन लाए, और फिर हमने बीफ में जब आए ब्राह्मण लेके लास्ट ईयर तो उसमें भी हम डाइवर्सिफाई करते रहे। बट मीडियोक्रिटी में मेरा काम नहीं मेरा होता, बेस्ट से बेस्ट पे ही जाता हूँ। तो ये रॉजर का बड़ा शुक्रिया, रॉजर जेफरिस का, कि इसने टाइम दिया और पूरा आज मैं स्टे भी यहाँ किया कल रात से, और जो आज मैंने देखा आप पीछे वीडियोस में भी देख रहेंगे, वाज माइंड ब्लोइंग। मैंने इतनी खूबसूरत ब्राह्मण अपनी लाइफ में नहीं देखे, और दे ऑफ कोर्स द बेस्ट वन। थैंक्स रॉजर giving us a time. What I've seen at your herd, they are beautiful, so congratulations to you. You have done really well. This breed was supposed to be our regional breed, but I think you guys have done really amazing job. I will get into that. So if you can tell us a little bit about Elrose, where it started and who started it, and then obviously we'll continue further. Thanks, Has. It's thank you very much for coming. It's been a pleasure to show you around. Look, Elrose started in the west of Queensland at a place called Cloncurry that recorded Australia's highest temperature. So a very hot country, some dry seasons. You needed tough cattle that could walk and forage and do well. So nearly 70 years ago, my father took the first Brahmins out into that area. Yeah. And it's just progressed ever since until we were aiming at breeding just for our own herd, and then it grew and grew, and we had people requesting to buy cattle, so Elrose has grown into what it is today. So we were looking for a robust, tough, fertile animal, but we've never lost track of the fact that it still all ends up on the hook. Yeah. And you need to breed an article that with high yield and plenty of meat that can go onto the hook. Yeah. So it's been a balancing act. सो बेसिकली रॉजर ये कह रहा है कि 70 साल इनके जो वालिदैन हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया, और ये क्वींसलैंड एक्चुअली बहुत गर्म एरिया है, तो इस जगह पे उनको एक ऐसी ब्रीड चाहिए थी जो कि गर्म मौसम में सरवाइव कर सके, तो वहाँ से इन्होंने ब्राह्मण स्टार्ट किया और एवर सिंस ये उस पर काम कर रहे हैं। विल कम इन टू द परफॉर्मेंस एंड EBVs एंड टू दैट इन अ मिनट, बट इफ़ यू कैन जस्ट टेल मी हाउ मैनी Brahmins you have in total at the moment at Elrose? Oh, Elrose at the moment is running about 4,000 Brahmins. Okay. We've reduced and moved down here. Not that many years ago we were running a big commercial enterprise of 35,000. Wow. So we needed a lot of bulls for ourselves to live up in the harsh country up in the Gulf of Carpentaria. So the aim was always to breed a lot of bulls for ourselves, and then bulls that suited clients as well. Okay. इनके पास अभी तकरीबन 4000 ब्राह्मण हैं, तो ये 35,000 ब्राह्मण भी
ब्रीड करते रहे हैं, जो कि बुल्स भी दूसरों को ऑफ कोर्स उसमें देते रहे हैं. एंड इट्स ऑब्वियसली 9,000 एकर्स हियर. Yep. या तो 9,000 एकड़ है इनका यहाँ पे, और मैं कंट्री आप पीछे से देख भी रहे होंगे. तो 9,000 एकड़ में इनकी ब्रिलियंट मैंने फैसिलिटी यहाँ पे देखी है. You, Elrose is obviously, when it comes to Gray, you probably the biggest, right, in the country? Oh, I guess near so. Yeah. I don't know too much about others, but we would be the biggest recorded herd of greys. Yeah. When you started this recording and performance, and first, why you had to do that? Well, I had a researcher who called to Elrose some 30 years ago and looked at the cattle and said, "Roger, you got to get these on the breed plan." He looked across the herd, and so I took his advice and we started then. And how long ago was that? 30 years ago, 30 in the years early ago. 90s, and ever since there's become more and more traits that you could record, and there's also become the use of genomics now that you can add in to help, and different research projects in Australia like the CRC and then the Brahman Bin project have proven the need and the accuracy of doing research and what it can do for your cattle. So I think the biggest thing it does for me is I have a surety of what I'm breeding and where they're going, and I have a surety of what they're going to do for my clients. Yeah. I'm not guessing. So 30 साल पहले ये इन्होंने हर्ड रिकॉर्ड किया, परफॉर्मेंस यानी जो सारा बर्थ वेट से लेकर अब तक सारी रिकॉर्डिंग है उससे कर रहे हैं. तो एक रिसर्चर ने कहा कि तो आपको डेफिनेटली इसको प्लान पे लेके जाना पड़ेगा, ब्रीड प्लान. जो आप देखेंगे भी, गूगल करेंगे तो ब्रीड प्लान आपको सारा ट्रैकिंग बताएगा. यू थिंक सिंस यू गॉट ऑन अ ब्रीड प्लान you producing better animals? Oh, without a doubt. Without a doubt. Every year getting better, because we were lucky to have a large volume of bulls to pick from. Yeah. We've been determined to not get hung up on any one trait and bring all traits up together, which is slower but better because balance is better. And I have no doubt you can watch our performance climb, and we've only been able to do that because we've been able to make sure that the bulls we used had the right performance to go another step each year. Yeah. So basically farmers, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा इनसे, मैंने ये पूछा कि जब से ये ब्रीड प्लान में आया तो क्या ये बेहतर एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये उन फार्मर्स के लिए सेम जो डेयरी में भी और बीफ में भी जो बिलीव करते हैं कि एनिमल कमर्शियल हो जाए, बस एनिमल होना चाहिए, ये नहीं वर्क करता. तो अभी मैं इनसे इनका जवाब इसमें ये था कि अब ऑफ कोर्स सारे ट्रेड्स को लेके ये एक बेहतर बैलेंस एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं और चॉइस भी बहुत है उसको देने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली हाउ आई शुड पुट इट. You think Australian Brahmins are different to the rest of the world? You've been to lots of places in the world. Yeah, without a doubt. Very much without a doubt. The Brahmins take up the large percentage of the herd across the north of Australia, and we're very commercially orientated. We need cattle that can perform, can first of all live in that country and can breed in that country and grow on grass. So we do need a different sort of Brahman than one that is being looked after a bit better, because we can't afford to look after them. We need to have cattle that can row their own boat, as you would say. Yeah. So it is very different. I think the Australian breed is different because of what's been asked of them. We don't have as big as emphasis on show animals. We're looking more and more and more for animals that can perform.
सो बेसिकली मैंने इनसे ये पूछा कि ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण जो दुनिया में ब्राह्मण उससे समवट डिफरेंट है, तो उन्होंने कहा हाँ डिफरेंट है इसलिए बिकॉज़ यहाँ पे उनको अच्छा लुक आफ्टर नहीं हम करते सीधा, बिकॉज़ यहाँ पे देखें 9,000 एकड़ है, एक बंदा इनके पास काम कर रहा है और एक ये है इनकी 71 साल इनकी एज है, तो ये ज़्यादा लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तो वो एनिमल जिसकी फंक्शनैलिटी बेहतर हो, और यही इनकी डेयरी में भी ऐसे ही है क्योंकि एनिमल जो रोबस्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो और जो जिसकी फंक्शनैलिटी बेहतर हो. I mean, obviously, we have some of your genetics in Pakistan through Rocky Repro, and obviously, first time I took registered heifers through EBA, and I think the grey ones were from yours. How you guys are different? I'm not asking you which one is better. How are you different from EBDs? I think EBVs and EPDs probably have a similar aim, but the data is probably collected and collated in a different way. They all hinge on similarities in a particular group. So the data collected on that group in living in that same environment. So the environment here, I think, is very different, and we probably have have concentrated our EBVs on adapting to that environment, on growing well on grass and being fertile on grass. So I don't know a big lot about. I'm only aware of and across the Australian EBV system. It would be aiming to do similar things, but probably in different ways. Yeah, basically इनसे मैंने पूछा EBDs जो US में यूज़ होता है और EBVs जो यहाँ पे, तो उन्होंने कहा तकरीबन उसका एम एक ही है मगर डाटा कलेक्शन जो है उसका डिफरेंट है. वो ऑफ कोर्स किसी अगली वीडियो में बताएंगे. मसलन इनको चाहिए वो एनिमल जो ग्रास पे पले, ग्रास पे प्रेग्नेंट हो, ग्रास पे काविंग हो, क्योंकि असिस्टेड काविंग नहीं है, तो मोस्टली यहाँ पे खुद ही काविंग होती है, खुद ही उसने जाके दूध वगैरह पीना है, असिस्टेंस कम है. Okay, thanks. First of all, obviously, a lot of credit go to 𝐼𝐶 Cattle as well, Mac, and you letting us few of your top heifers. What do you think when these heifers will go over there? Where we starting from? Are we right somewhere in the center, or they're right up there? The specification which Mac has given you from 𝐼𝐶 Cattle. Look, I think it is a big step ahead. This herd that you're taking over there, I think it's certainly a big step ahead, and it'll be exciting now to see each generation, each year, you're taking the Pakistani herd further ahead. I believe you've certainly done a wise move and a good move to take what you're taking over there, and the challenge now will be to keep them going ever upwards. So हमने और 𝐼𝐶 कैटल ने इनसे तकरीबन हमने 100+ हेफर्स प्रोक्योर की हैं, मगर बहुत हाई एंड क्राइटेरिया हमने सेट किया था ताकि हम बेस जो है वो ऑलरेडी तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 1% है वहाँ से शुरू करें. तो रॉजर की बहुत मेहरबानी कि इन्होंने हमें वो दिया, मगर इंशाल्लाह ये हम इस जेनेटिक्स को ऑफ कोर्स खुद तक तो नहीं रखना, ये तमाम फार्मर्स तक इवेंचुअली जाएगा. तो पाकिस्तान ऑलरेडी बिग जंप है, इन्होंने 70 साल उसको लगाए, हम वो खुद प्रकोर यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह बहुत आगे ब्राह्मण जो हमारे ब्रीडर्स हैं उनके लिए बहुत बहुत इंजॉयबल मोमेंट आने वाला है पाकिस्तान में. Second last question. What do you think a perfect Brahman look like? A perfect Brahman bull and a heifer. What do you think? What do you breed for? 'Cause that's my perfect Brahman. I look for certain physical attributes. Sometimes what you think might be a perfect animal, like a film star, may not be what will perform, might turn out bloody useless. Sorry, may not perform for you. But if you have, if you concentrate on
on a good growing animal that's structurally correct, can walk well, and good udders on females, good underlines on males, plenty of muscle on top and spring a rib. In other words, plenty of doing ability. I think they, at length, I think they will all turn out good-looking cattle anyway. But there is a fine line between what you need to win at a show. It's a different animal to what we think might be the perfect animal to still have the right phenotype to produce commercially and make money for you. Yeah. So basically मैंने इनसे पूछा कि एक परफेक्ट ब्राह्मण आपके नज़दीक क्या है, तो उन्होंने कहा कि वही एनिमल जो पहले इन्होंने कहा कि फंक्शनल हो, ऊपर मीट हो काफ़ी, फिर रिब्स ओपन हो, स्ट्रांग हो, तगड़ी टांगें हों, तो वो उनका ये कहना कि वो वैसे ही खूबसूरत होगा। मगर आप पर्टिकुलर अगर शो एनिमल के लिए जाएं, अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसका कोई वो फ़ायदा नहीं है। Thank you very much, Roger. If you have any last message for Pakistani Brahman lovers, you can give it to them and I'll pass on this to them. Oh, look, what Mac and Hass are doing is truly exciting for the future of Pakistan commercial breeders. I believe it's a step in the right direction, and I will be wishing them all the best in the future, and really hope to watch them year by year and watch the progress and stay being involved. So good luck. And top heifers, they don't come cheap. So thank you. Thank you, Roger. I really appreciate your time. And farmers, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बड़ा ब्राह्मण का ऑफ कोर्स मुझे अब नया वो चांस आया, पर जो भी करना होता है मुझे वो टॉप से ही करना होता है, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं बॉटम को ब्रीड करके। तो टॉप ब्रीड मेरा भी उन फार्मर्स के लिए भी मशवरा है कि अगर आपने ब्रीडिंग करनी है तो बजाय ऐसे कि आप बहुत ज़्यादा नंबर्स की तरफ जाएं, क्वालिटी ले लें, कम ले लें, पर आपका जो गोल है वो ऊपर से ही शुरू होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।